So I think I am audible now. It's 5:24. So my name is Shashank. I am a PhD scholar at IIM Raipur. This is my third year going on, and the group that I have created in Telegram used to exist since last uh, 3 years, I guess. So when I got admitted in 2021, I created that Telegram channel because I was suffering from getting information regarding management institutes PhD, especially IIMs, and there's a very lacuna of information. There is a very minimal amount of information available outside the world, outside the IIM world. Even if you search YouTube, you search Google, they all talk about IIM's MBA. Nobody talks about IIM's PhD. So my objective was to cater this gap. And I thought there's a lack of awareness also among various candidates who are doing their masters or other program at institutes other than IIMs, whether it is central universities or IITs. IT people know because they also have PhD coursework there, but people you pursuing their masters in say central universities or state universities are very well unaware of PhD programs at IIM Raipur. So to cater this gap only, I have created that group, and almost 200 plus people are with me since last 3 years. I was very active in 2021 and 2022, but since last 2 years, because of my own commitments to PhD, because when you get to PhD, you get a very minimal time for other things that you want to do. So I have not been so much active, but yes, whenever I get any queries, whenever I get any questions from the candidates, I take my time and come to get you people educated. So if I can get some kind of background and introduction from you side, starting from Mr. Prabhat. Hello, sir. Good Yeah, afternoon, hello. everyone. Good afternoon, sir. So I'm Prabhat Kumar, and in December 2023, I've qualified for JRF, and in June 2023, I have completed my post graduation from Delhi School of Economics in Hmm. Delhi, and I have completed my undergraduation from Deshbandhu College, Delhi University itself. Thank you. Okay. So your background is economics, No, sir. My background is HR, commerce, MCom, Masters in Commerce, masters in what? specifically HR, Specifically HR. So commerce, commerce, you want to apply PhD in HR and HR, OD. OBHR. Yes, Correct. sir. Correct. Correct. Great. 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 I can speak Hindi also if anybody of you want. So, but English is since common among all, so I'm using it. Miss Kavita, I think you had texted me, right? Yes, sir. My name is Kavita Kumari. I am from Bihar. Correct. Recently, I qualified in NET JRF in Commerce and looking for PhD admission in IIM. That's all. If I may ask why I am. बिकॉज़ सर आईआईएम में बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी है और मेरी सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है कि मैं इंग्लिश अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ, तो मुझे यही प्रॉब्लम थी कि मैं कैसे करूँ? आपने मास्टर्स कहाँ से किया है? बिहार से, नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी कोई। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा। ओके। सब्जेक्ट कॉमर्स। यस सर। कॉमर्स में स्पेशलाइजेशन होगी मास्टर्स में तो। यस सर, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ओ, तो हम भी फाइनेंस में ही हैं, बहुत हुँ। बढ़िया। मिस्टर गौरव। Good evening, everyone. गुड इवनिंग। Myself, Gaurav Shankar. I am basically from engineering background. I have my BTech and MTech in electrical engineering, and I'm presently working here in Chhattisgarh itself. ओह ग्रेट। From I'm working here in Durg, Bhilai Durg. ओके ओके ओके। I'm basically working in technical education, हम्म। and
and I'm thinking of pursuing PhD in management. In That's why operations I've department? joined this. I'm from electrical department. No, no. Okay, I will tell what are the Huh, departments in various IIMs, huh. because IIMs don't offer And engineering PhD. huh, uh, I know they don't offer. They Yeah, basically offer, I think, information sciences or operations, DS, like information that. systems, Huh, operations. yes, yes. Yeah. So, And I'm thinking of joining strategic management or HR, hmm because hmm since I have gate score, hmm so I think I can use that correct, correct. You can very well use gate code. to uh, Correct. and and probably I am thinking that let's see uh, now what can I do, and I will apply next year. Okay. No, no, no issues. You can give 1 year very rigorous preparation to yourself, अभी and that देख लेते preparation. कि Correct, correct. क्या है कैसे है, तो सोचा Bilkul, bilkul. यहाँ सेशन ज्वाइन कर लेते. Correct, correct. Very nice idea. No issue, no issue, no issue. हम्म. So, IIT क्यों नहीं? Why और IIM? इसीलिए मैंने अभी सर एक्चुअली मेरा मेन, मैं तो देख रहा हूँ सर टेक्निकल एजुकेशन में कि पीएचडी Mm-hmm. भी कर लें तो फिर उसके बाद स्कोप कम रहता है, लेकिन मैनेजमेंट में पीएचडी करने से स्कोप थोड़ा बढ़ जाता है. Mm-hmm. एक तो आप वो जो So, you टीचिंग लाइन में है वो तो अलग चीज़ है सर, प्लस कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी जा सकते हैं आप टीचिंग लाइन में हैं और भी? आरएनडीज में भी. हाँ, मैं टीचिंग लाइन में ही हूँ. Okay, okay, okay. So, मतलब college professor type? हाँ जी बिल्कुल. Okay, sir. बोला ना मैं टेक्निकल एजुकेशन में अभी 4 साल से. Correct, correct, correct. Okay. और इसीलिए मैं अभी थोड़ा देख रहा था, एनपीटीएल के कोर्सेज चला रहे हैं आईएम बेंगलोर, हाँ, हाँ, तो तो उसको भी मैं थोड़ा थोड़ा देख रहा हूँ, यूट्यूब में भी आते रहते हैं, हाँ. तो सोचा कि एक थोड़ा पीछे बैकग्राउंड बन जाएगा तो आगे हो सकता फायदा रहे जब इंटरव्यू अपीयर होंगे स्कोर से. Correct. So, you want to be in education field only, or you want to switch to corporate? नहीं, कॉर्पोरेट में देखिए जो बेस्ट रहेगा उस समय देखा जाएगा. अभी तो नहीं, हम एक ये बार सवाल एक एक इसलिए स्टेप पूछ रहे करके हैं. देखते हैं. हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे जी हैं क्योंकि अगर आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हैं तो IIM PhD बहुत अच्छी ऑप्शन है आपके लिए. बट अगर आप टेक्निकल एजुकेशन में ही रहना चाहते हैं तो जी. आई थिंक IIT वुड बी बेटर. नहीं नहीं, टेक्निकल एजुकेशन में नहीं रहने का है, क्योंकि अच्छा, अच्छा, देखिए अगर ठीक है. टीचिंग में जाना है, अगर मेरे पास आईएम से पीएचडी हो जाएगा तो कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन में जा सकता हूँ. करेक्ट, 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 करेक्ट. ठीक है, बाद में बात एनआईटीज में भी करेंगे, रहता बात है. इस पे करेंगे, बात जी इस पे करेंगे, बात इस जी. पे. ओके. मिस्टर अजगप्पन, प्लीज इंट्रोड्यूस टू द ऑडियंस. Azagappan, may I audible to you? Okay. So Pernika, that I think she left. So I will use a um, Prabhat. You have raised hand. Any problem? Any question? Yes, sir. I need to ask. I need to ask, what's your research specialization? What's your research area? Okay. So as I said, I am doing PhD in finance department, and this is my third year going on. So my area of research is climate finance. Two very broad subjects, but an subset of it is, so basically what we are trying to do is whether these environmental challenges across the globe that is going on, like global warming and CO2 emissions, are these impacting managerial decisions or not. So this is the area of topic that I am working on. Okay, sir. Thank you. Okay. So whenever you get into PhD, there are multiple horizons where multiple avenues are open to you, and you can use those options and other things to recruit for yourself. What topic should I choose? And that topic should be very
uh, kind of doable plus interesting. So this is the kind of thing we will talk it in detail. So Yes, sir. Yeah. uh, Yes, sir. feel free to ask in between. बीच में कभी भी पूछिए कोई प्रॉब्लम नहीं. What I am writing is visible. Yes, sir. Yes. So uh, first I will write what I should cover, and if I am leaving anything, अगर मेरे से कुछ छूट रहा हो तो प्लीज आप बीच में बताइएगा. So PhD design I will talk how it is designed. Then the course. You need to talk about interview, selection. I think Kavita ma'am want to know about research proposal. Yes, sir. Hmm. Any other thing? So right now, till now, we can't think of, I can't think of any such topic. But as we proceed, if I think of anything, I will tell you. Okay, okay, okay. So let's start with what is PhD all about. So IIM PhD is a little bit different from what you see in universities and IITs. So in most of the IIMs, it is all almost of 4.5 years. Some IIMs also have 5 and some IIMs have 4. But you get a 6 month extension. Um, depends upon the specific criteria that you fulfill. You get stipend, which may range from 35 to 45,000. You get database access for research. You get grants for laptop. तो लैपटॉप खरीदने के भी पैसे देते हैं, कॉन्फ्रेंस जाने के लिए पैसे देते हैं, और देयर इज नो एकोमोडेशन फीस. आपको कोई फीस नहीं देनी है. एंड आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द आईआईटीज दे यूज टू टेक फीस. So, but there is no PhD fees in most of them. This I'm talking in general. But you have to check with specific IIMs. So these are the things that you get while doing PhD in IIMs. Sir, Yes. these are the perks and benefits, right? These are the Yeah. perks and Yeah. benefits which Yeah. we get aside Yeah. from the education. Why should we Yeah. choose IIM academically? One Means what minute. they offer. So you're asking why should we choose this, right? Yes, sir. See, my bachelor's and master's has been from BHU. So I have seen Central University environment, and I am also currently viewing IIM environment. So first thing that you get is the rigor, the hard work. Second thing you get is what we call facilities. Rigor in the sense here, until and unless you publish your research work, you won't get
PhD degree. And publication is not that we what we do in central universities. Publication here means you have to publish in top tier journals. These top journals are either American journals or either European journals. These access you get in IIMs. IITs also have same kind of that curriculum, but those are the most of the time top IITs. Mid-range IITs also have this kind of environment. But what I am saying is in IIMs, first rigor is important. Second, the facilities are important. There is no fees that you are paying. So why IIM come from within you. So if you want your PhD to be valuable, if you want to contribute something to the society, if you want to contribute something to the literature, if you want to understand your subject in deeper, then you should go for IIMs. Because the kind of rigor that they would provide, the kind of hard work that you will do there, being in that environment, will not be available to you in universities. So that is why I say IIMs are better in those terms. क्योंकि आपको यहाँ पे पब्लिश ही ऐसा करना है. आप इंडियन जर्नल्स में पब्लिश करके अपना काम नहीं चला पाएंगे. इंडियन जर्नल्स में पब्लिश करने पे आपको वहां पीएचडी मिलेगी ही नहीं, भले आपका पीएचडी का 5 साल खत्म हो जाए, लेकिन आपको पीएचडी वो नहीं देंगे क्योंकि उनके पास एक क्राइटेरिया है. देयर आर सर्टेन जर्नल्स क्राइटेरिया. So they rank journals based on certain things: A star, A, B, C, D. So if you are in universities, you can publish in these three and you can get PhD. I don't think D, but B and C you can publish and get PhD. But in IIMs, you have to publish in these three. And getting publication in these are very rigorous job, very hard-working job. Most of the time, people have to spend their 1, 2, 3 years. Abhi recently, Friday ko we had a presentation of one of our faculties. So he submitted his paper in 2021 in a journal which was a category, and it got its acceptance. The journal said that I will publish your paper. It's called acceptance. So he got his acceptance in 2024, last month. 4 times he has to revise his paper. 4 revision. This has a benefit on one side. This has a cost on one side. Benefit is, since these are the top-notch institutes of your country, so they want their scholars to be of that quality. They want that their scholars to be of that acumen कि आप कहीं भी जाके खड़े होके बोल सकें, क्योंकि आपको एक अच्छी जगह पहुंचना है. सो दे विल गिव यू अ लीप इन योर करियर. सो उसको पाने के लिए आपको कुछ हार्डवर्क, कुछ रिगरस काम करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी available in the environment of IIM. So IIM gives you that environment. IIM give you that feel कि आप वहां जाके करोगे काम. अगर हम BHU में रहे होते या किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से मैंने PhD की होती, तो शायद हम जिस तरह का काम आज कर रहे हैं, हम उस तरह का काम नहीं कर पा रहे होते. हम वहां कुछ और ही लेवल का काम कर रहे होते. हम IIM में है तो हम कुछ और लेवल का काम कर रहे हैं. हो सकता है हम अहमदाबाद में होते तो वहां पे कुछ और लेवल का काम कर रहे होते. सो एनवायरमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू यू, एंड इन दैट एनवायरमेंट यू विल फाइंड द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. Have I answered your question or not? Yes, sir. I'm not saying other institutes are not providing it. IITs are also providing it, but I'm not very well aware of IITs. Some IITs are providing, some IITs are not providing. So what were our next question? So let's talk about interview first. I think most of the people are here for knowing about interview. Let's keep it as selection procedure. So there are certain exams that you need to clear, and I think most of the people are having that much clarity. Either you should have JRF,
or you may have GMAT as one person have here, or you can have CAT scores. So these are different exams that you can give to enter into PhD. Once you clear this exam, there will be a interview call made to you. Yeah, like Yeah, please, please. yeah, the Your lot your of your voice is IIMs breaking. accept GRE. Your voice is breaking. Yeah, sorry. I just wanted to say that some institutions also accept GRE and some institutions can Correct, correct, won't as well. So I just correct, correct, correct. GRE is also there. Just I have not written it. Even some institute have net also, but net is slowly and gradually getting out of the market. So until unless you have JRF, they will won't consider you. But some institutes have. They still are they are still accepting net scores. So once you clear any of these exams, you can apply for the respective IIM and you will get an interview call. Then there will be a final selection. Now this is important. What to do when you get an interview call? Be prepared with one question. Tell me something about yourself. Who would like to answer this question here? Abhi, Yes, sir. Mr. Prabhat? Yeah. Yes, sir. Yeah, please answer this question. Tell me something about yourself. Suppose I am So an my name is interviewer. Prabhat. I am an Okay. interviewer. I'm asking you a question. You are appearing for an interview. Please tell me something about yourself. So, sir, my name is Prabhat Kumar, and recently I have qualified. So, should I mention this again or just skip this part? Just, uh, just speak whatever comes to your mind. Okay, sir. So, my name is Prabhat Kumar, and recently I have completed my post graduation from Delhi School of Economics and my graduation from undergraduation from Deshbandhu College, University of Delhi. And I've completed my senior secondary schooling from DAV Public School. And uh, can I start again, sir? I've missed some part. Sorry. Please, please, please. Means I won't be doing this in the interview, but obviously I want to prepare myself. Anyway, And I'm not trying to portray anything. Just I'm trying to give all the audience an example. Ki what mistakes can you do there? Okay. yes, yes, yes. So I will start again. So sorry. Sorry. Okay. So my name is Prabhat Kumar, and I have completed my post graduation from Delhi School of Economics. And apart from this, I was part of ECA Society, where I hold the rank of junior coordinator and senior coordinator, and I passed with the percentage of 73.57%. And I've completed my graduation from Deshbandhu College. And apart from that, I was part of Comstock Society, where I hold the position of executive, and passed my graduation with the percentage of 73%. I've completed my I passed from my senior secondary schooling from Delhi Public School with 88.8%. And apart from academic, I have my interest in playing sports, several types of sports such as cricket, badminton, and etc. And yes, that's it. Thank you. Anyone else would like to come and answer this question? Savita ji, कविता Yes, sir. हाँ आप भी बोलिए एक बार टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ My name is Kavita Kumari. I am from Madhubani, Bihar. I have completed my master in LNMU in accounting and finance from LNMU University, and I did my bachelor degree in
accounting and finance from MRM College, Darbhanga. Recently, I qualified UGC NET JRF in commerce. Thank you. ठीक है, तो इसी से आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए, फर्स्ट थिंग बी क्लियर, यू आर नॉट अपियरिंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू, नाइदर यू आर अपियरिंग फॉर अ MBA इंटरव्यू. So here you need to have a different answer for this question. Tell me something about yourself. The interviewer will have two focus. Your research capability, analytical skills, and core knowledge. Because these are the three things that you require in your PhD. And nobody here talked about this. For example, as you said, Mr. Prabha, your name, your master's and graduation, all about your background, your extracurricular activities, 12th qualification, other qualification, hobby, sports. In any of these information, if I'm getting any of these three as an interviewer, I'm not getting any of these three. And all these information are available to me in your form also that you have applied. Correct? Yes, sir. So frame a ready-made answer for it. I will suggest everyone कि सब लोग इसका एक रेडीमेड आंसर तैयार कीजिए और उस रेडीमेड आंसर में आप कुछ इस तरह इंक्लूड कीजिए. फर्स्ट पैरा जो आपका हो उसमें आप बहुत ब्रीफ में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, नेम, बैकग्राउंड एंड बैकग्राउंड में 12th तक मत जाइए. Restrict yourself to graduation and undergraduation, post graduation and undergraduation. इसके पीछे मत जाइए. एक्स्ट्रा करिकुलर आप वही बताइए जो एकेडमिकली हो. फॉर एग्जाम्पल डिबेट कॉम्पिटिशन, फॉर एग्जाम्पल सम दैट उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशंस. ऐसे में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो यू शुड इंक्लूड दोज इन योर इंट्रोडक्शन. दिस इज द फर्स्ट पैरा दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. A brief introduction of yourself, which should include your name, from where you are coming, what has remained your graduation and post graduation, and both academic curricular activities you have done. That's all. आप ये मत बोलिए मैंने JRF क्वालिफाई किया है, मैंने GME GMAT क्वालिफाई किया है, दैट दे नो. ठीक है. सेकंड, जब आप पैराग्राफ पे आए तब आप उन्हें रिसर्च के बारे में बताइए. व्हाट सबसे इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर माय वर्ड्स दैट आई एम सेइंग, दिस क्वेश्चन विल डिसाइड योर इंटरव्यू. Only this question. Tell me something about yourself. Because here they will get content from where they should ask question. This is an opportunity for you to tell them that this and this and this are the things from where you should ask me question. आप उन्हें बताइए मेरा ये रिसर्च इंटरेस्ट है, आप मुझे बताइए मैंने ये पढ़ाई की है, आप उसमें बताइए मैंने ये काम किया है. Then they will get those contents from where they should ask question. अगर आप यहां फिसल गए और आपने हैफिजर्ड वे में ऊपर नीचे कुछ भी बोल दिया, then they will ask you random questions and random questions would not be able to you would not be able to tackle. आप उन्हें टैकल नहीं कर पाएंगे. अगर आपने बोल दिया मैंने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पढ़ा है, then accounting and finance is a big ocean. They can ask anything in that. Be very very specific that I have done this, I have done this, I have studied this. So second paragraph में आप उन्हें अपना इंटरेस्ट बताइए. This is my interest area. I want to do PhD in this. For example, one person said OBHR. OBHR में what? Employee behavior, employee satisfaction, and what not. Other things अगर आपको पता है तो. What is your research interest?
एंड रिसर्च इंटरेस्ट के लिए आप एक अप्रोच फॉलो कर सकते हैं दैट आई हैव सजेस्टेड इन माय प्रीवियस सेशंस आल्सो, व्हिच इज अ नैरो डाउन अप्रोच. This diagram I used to tell to everyone. Narrow down approach. First, identify your subject. For some people, it would be OPHR. For some people, it would be finance. Some people operations. This is your subject. Subject को narrow down कीजिए आप एक टॉपिक पे. For example, finance में corporate governance. This is my topic. Now, topic को आप narrow down कीजिए research question. How does corporate governance impact firm performance? How does corporate governance impact firm value? How does corporate governance impact managerial decisions? So, आपने कहां से स्टार्ट किया था? फाइनेंस से. फाइनेंस से आप कहां पे आए? कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे. और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आपने 2-3 क्वेश्चन बना लिए थे. When you will speak in this flow, they will get to know yes, this particular candidate is aware of how to find question, is aware of his subject area, is aware of the research that he wants to do. अगर आप ये नहीं बोलेंगे ना तो उन्हें डाउट हो जाएगा आप पे. Am I clear? Anybody have question? Yeah, I got it. Thanks. No, sir. So No, दूसरा sir, not as of now. दूसरा आप पैराग्राफ रखिए अपने रिसर्च इंटरेस्ट पे और डायरेक्ट रिसर्च इंटरेस्ट पे मत आइएगा. यू कैन से दैट आई हैव डन माय मास्टर्स इन फाइनेंस एंड वेयर आई हैव स्टडीड दिस from those courses I got to know that I am very much interested in how how corporate governance is being operated in our country, so I want to do research in this area. अब इससे क्या होगा कि जो अगला क्वेश्चन आएगा वो आपके ऊपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस आएगा. सो हियर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज एग्जांपल. आप लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, आपको अपने एरिया में अपने फील्ड पे उस तरह देखना है. हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस पकड़ के चलते हैं. तो अब क्या होगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस से आपके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आपका अगला काम क्या है कि प्रिपेयर योर क्वेश्चन. आपने जो वहां बोला है उसको प्रिपेयर करके रखिए. ट्राई टू रीड अबाउट दोस थिंग्स. अगर आप वहां कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलने जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में चीजें आपको अच्छे से पता हो. फॉर एग्जांपल दे मे आस्क यू व्हाट डू मीन बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस. If some OBHR candidate is saying that I am interested in employee satisfaction, what do you mean by employee satisfaction? Satisfaction is subjective for everyone. Your satisfaction may not match with my satisfaction. So how you are going to measure it? This kind of question they may ask to confuse you. So जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे. पढ़ना कहां से? कुछ अच्छे जर्नल्स पे जाइए, वहां से पढ़िए, देखिए लोगों ने क्या लिखा है उसके बारे में, वहां से पढ़िए. तो आपको उसके ऊपर एक क्लैरिटी आएगी और तब आप वहां पे उसके ऊपर बात कर पाएंगे. अगर आपने जो चीज बोला है उसके ऊपर बात नहीं कर पाएंगे देन दे विल गेट कि इसे पता नहीं है, सिर्फ इसने बोल दिया है. इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये आता है इस वाली कैटेगरी में, कोर नॉलेज वाली कैटेगरी में, कि आप जो बोल रहे हैं वहां पे उसका आपका नॉलेज है कि नहीं, कि बस आप कहने के लिए बोल रहे हैं मैंने फाइनेंस में मास्टर्स किया है, मैंने अकाउंट से मास्टर किया. अकाउंटेंट्स मैंने गलती की है. आई वॉज अपियरिंग इन 2021 फॉर IIM इंदौर इंटरव्यू और मैंने उस समय मुझे ये चीजें नहीं पता थी. दैट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू. तो आपने जो भी गलती की वही गलती मैंने भी की थी. मैंने वहां पे हाफिजर्ड वे में जाके कुछ भी बोल दिया. आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड विद अ वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने बोल दिया हम अकाउंटिंग में वो कुछ भी पूछ रहे हैं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंटरनेशनल इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो फिर भी हमें पता होता है. इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ISA, ISA1, ISA2 और ऑडिटरी स्टैंडर्ड्स, कुछ भी पूछेंगे फिर वो. अगर मैंने वहां बोला होता नहीं सर मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, तब वो मुझसे हो सकता है बैलेंस शीट, P&L की चीजें पूछते. लेकिन मैंने अकाउंटिंग कह दिया. अकाउंटिंग इज अ ब्रॉडर टर्म, तो वो चले गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में. वो भी इंडियन नहीं पूछा, इंटरनेशनल पूछा, क्योंकि जानते थे कैंडिडेट फंस जाएगा. तो यू हैव टू वेरी टैक्टिकली प्ले विथ इट. आप जो बोलेंगे इसके आंसर में उसी से क्वेश्चन आएगा. तो बोलिए वही जो आपको पता है.
बोलिए वही जिस पे आप चाहते हैं कि हाँ भाई तू इस पे पूछ। Am I making sense? Yeah. Yes, sir. और तीसरा पैराग्राफ फिर एक छोटा सा पैराग्राफ दीजिए, उनकी थोड़ी तारीफ कीजिए, दैट योर इंस्टीट्यूशन विल बी ग्रेट प्लेस फॉर माई रिसर्च वर्क। ऐसा कुछ एक दो सेंटेंस डाल करके कंक्लूड कीजिए, अपने आंसर को कंक्लूजन दीजिए। और कोशिश कीजिए कि ये तीनों लिंक्ड रहें एक दूसरे से, ऐसा ना लगे कि आप पैराग्राफ आंसर कर रहे हैं। फ्लो में रहे, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे, ताकि सुनने वाले को भी थोड़ा अच्छा लगे। Since I am interested in this and I have found that the resources available at your institute or at institute of XYZ will be very fulfilling to me, and that will help my research work to go ahead and smoothen my journey. That's it. तो ये आपकी क्या बताएगा, आपकी रिसर्च कैपेबिलिटी बताएगा कि आप रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं। ये तो हो गया आपके सब्जेक्ट और टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इसके अलावा जो दो चीज आपको और ध्यान देनी है वो है रिसर्च कैपेबिलिटी और एनालिटिकल स्किल्स। इस पे क्वेश्चन जनरली तब आता है जब आपका पहला क्वेश्चन ये हो गया, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। हो सकता है 10 में से 2-3 लोग ये ना भी पूछें, तो दैट इज अ चांस, मैटर ऑफ चांस, बट मैक्सिमम टाइम ये पूछा जाता है क्योंकि उन्हें भी चाहिए कि हम क्वेश्चन कहाँ से पूछें, ये कैसे पता चलेगा। मैंने आपको पहली बार देखा, कुछ भी थोड़ी पूछना शुरू कर देंगे। तो I will give you an opportunity to tell, give an opportunity to you कि आप मुझे बताओ कि आप क्या चाहते हो, और उसका यही क्वेश्चन है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। उससे आप जो बोलोगे, आई विल पिक अप सम क्वेश्चंस फ्रॉम देम एंड इंटरव्यू विल गो ऑन बाय ऑन। इतना हो जाने के बाद अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि भाई आप स्टैटिस्टिक्स जानते हो या नहीं, आप एनालिटिकल टूल्स के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो। तो उसके लिए अब अलग अलग फील्ड में अलग अलग चीजें यूज होती हैं। एक एडवाइस जो हम देते हैं आईएम्स, स्पेशली आईएम्स के लिए, अदर जगह पे ये काम नहीं करेगा लेकिन आईएम में जरूर काम करेगा, कि आप कोशिश कीजिए कुछ रिसर्च वर्क पहले करिए, और ताकि आप उन्हें बता पाए कि ये रिसर्च वर्क मैंने किया है। अब रिसर्च वर्क कैसे करेंगे? अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में हैं तो जरूर वहां पे कोई ना कोई प्रोफेसर होगा। अगर आप मास्टर्स में हैं तो, या मास्टर्स आपने कर लिया है तो किसी के भी कांटेक्ट में आइए। कोशिश कीजिए कोई एक रिसर्च वर्क या पेपर अगर कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। कोई एक पेपर कहीं भी छपे, इंडियन जर्नल में छपे, सी डी, कहीं भी छपे, कहीं भी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उससे क्या होगा, आपका एक रिसर्च पोटेंशियल दिखेगा, दिस मैन इज और वुमेन, दिस पर्टिकुलर कैंडिडेट इज इंटरेस्टेड इन हिज एरिया, is interested for his research work. So before coming into PhD, he is getting some training. अगर ये कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, दिस विल गिव यू एन एज। हम अपना बताते हैं, लेट्स टेक माय एग्जांपल। तो बिफोर कमिंग इनटू पीएचडी मैंने कुछ एक एडिटेड बुक्स होती है, अगर आप लोग जानते हैं तो। एडिटेड बुक क्या होती है कि कोई एक प्रोफेसर होता है, वो कई सारे लोगों को बुलाता है, कई सारे ऑथर्स, मतलब कई सारे और प्रोफेसर्स एंड स्कॉलर्स, और एक टॉपिक सिलेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी। अब इस टॉपिक के ऊपर अलग अलग लोग, फॉर एग्जाम्पल 10 लोग हैं, तो 10 लोग एक एक आर्टिकल लिखेंगे, तो 10 आर्टिकल्स हो जाएंगे मेरे पास। 10 लोगों ने आर्टिकल लिखा, 10 आर्टिकल्स हो गए। अब उस 10 आर्टिकल को एक बुक में कंपाइल कर देंगे, ये हो गई एडिटेड बुक। अब अगर इन 10 आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल आपका हो तो आप बोलोगे ना कि मेरा छप गया। ये बहुत इजी है, बस आपको कोई एक ऐसा आदमी मिलना चाहिए जो एक जो मतलब कोई ऐसा प्रोफेसर मिलना चाहिए जो इस तरह की एडिटेड बुक वाला काम करता हो। नहीं है, कोई बात नहीं, हम ये सिर्फ एक्स्ट्रा एज के लिए बता रहे हैं। तो एक आर्टिकल आपका एडिटेड बुक में अगर छप जाता है, देन यू कैन शोकेस योरसेल्फ। आप अपने आप को शोकेस कर पाएंगे कि मैंने ये रिसर्च वर्क किया है, और आप ये बताएंगे कहाँ, इस सेकंड वाले पैराग्राफ में। This is my interest, and to cater my interest, I have worked on this, which was published in 2021 in so and so book or journal or whatever. Any question on this point?
No, sir. ये आपका बता देगा रिसर्च कैपेबिलिटी कि हाँ इसमें रिसर्च की कैपेबिलिटी है। इसके अलावा आप जो चीज पे फोकस कीजिए वो है, अगर आप मेरे ख्याल से सभी एरिया में यूज होता है, तो आप स्टैटिस्टिक्स पे फोकस कीजिए। बेसिक स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि बेसिक स्टैटिस्टिक्स एवरी रिसर्च में आपको एनालिसिस के लिए काम आएगा। तो हो सके तो स्टैटिस्टिक्स की थोड़ी नॉलेज अपने पास रखिए। फॉर एग्जांपल रिग्रेशन, कोरिलेशन एंड फैक्टर एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, ग्राफ, बस इतना बहुत है। तो बेसिक स्टैटिस्टिक्स भी हो सकता है इससे भी क्वेश्चन आए, क्योंकि आते हैं क्वेश्चन। और इसके बाद आई डोंट थिंक कि एक और क्वेश्चन और वो आपको फंसाएंगे कि वाई आई आई एम, जो मैंने शुरू शुरू में पूछा था, या फिर व्हाट इफ आई डोंट चूज यू, और अगर मैंने आपको ऑफर दिया तो क्या आप ज्वाइन करोगे कि नहीं करोगे। चलिए इसका भी एक डेमो लेते हैं। वाई आई एम, व्हाट इफ आई डोंट चूज यू। और थर्ड क्वेश्चन, विल यू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। सो प्रभात, कैन वी टॉक? Yes, sir. सो वाई आई एम, सपोज कीजिए आपका इंटरव्यू हो गया, इतने क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिए, लास्ट अब चल रहा है, सब थक गए हैं। वाई आई Okay. एम। So, sir, the reason for IIM is being the number one reason is it's a specialized institution where you get to know get to study your subject in a specialized field. You don't. Uh, the first reason is this one, and the another one is it adds to your person. It adds to your. It adds. It will definitely add in my career. It will definitely boost my career because I have completed my graduation from Delhi University and my post graduation, but I don't see myself as that confident as I should be. So maybe maybe because there must be there must be some fault in from my side, but I will definitely look to correct myself or look to give myself a chance through an institute like IIMs. So the first question, the first IIM, and what if we don't choose you? बस 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 So बस 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 बस, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, पहले इस पे इसी okay, तरह sir. था। नो, आप अपने बारे में कुछ निगेटिव क्यों बोल रहे हैं कि आई एम नॉट कॉन्फिडेंट या आई वांट टू ग्रूम। देखिए दो अलग अलग सेंटेंस हो सकते हैं। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट एंड आई वांट टू ग्रूम माई सेल्फ। हम आपको अगर बोलें तो आपको कौन सा अच्छा लगेगा? Second wala, sir. सेकंड वाला अच्छा लगेगा। तो ऑलवेज टेल पॉजिटिव साइड, निगेटिव सेंटेंसेस बीच में मत लाइए। आई वांट टू ग्रूम माई सेल्फ, आई वांट टू डेवलप माई पर्सनैलिटी, आई वांट टू डेवलप माई टीचिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स विच आई विल गेट more in the space of IIMs. I have I have got to learn that IIM is more rigorous place. I have got to learn कि IIM may provide me that edge in my career that I want. So I want to go with IIM. ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है, निगेटिव बोलना वहां जरूरत नहीं। इंटरव्यू में निगेटिव सेंटेंस नहीं बोले जाते। अगर आपके Okay, पास sir. कोई नेगेटिविटी है भी तो उसको पॉजिटिव सेंटेंस के थ्रू बोलिए। दोनों का मतलब यही है, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, आई वांट टू ग्रूम माई पर्सनालिटी। बट सुनने में अच्छा क्या लगेगा? आई वांट टू ग्रूम माई पर्सनालिटी, इससे झलकेगा कि यू हैव समथिंग डिजायर दैट यू वांट टू फुलफिल। आप अपने आप को छोटा महसूस नहीं कर रहे हैं, आप बड़े होने की इच्छा रखते हैं। Okay, sir. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इफ आई डोंट चूज यू। So, sir, I consider myself to a person who is hardworking, and I can give you example of that. I have completed my GRF uh, in a very environment in a very difficult environment, and I can survive the environment because PhD needs a kind of candidate who has better mental strength than a most of than rather than be very good at I would say research, be good at be a
I would say talented student, and I have that in me. I have that in me, and I think myself. I consider myself to be a person who is hardworking, who is disciplined, and yeah, that's it. सी आई कैन अंडरस्टैंड कि आप अभी प्रिपेयर्ड नहीं है इस ऐसे क्वेश्चंस के लिए, पर ठीक है, आपके मन में जो आ रहा है आप बोल रहे हैं। आप यहाँ पे आपने जो कहा सही कहा, ठीक है, आप हार्ड वर्किंग है, आपको चूज किया जाना चाहिए, पर हाँ, ये तो सब में होगा, हार्ड वर्किंग तो सभी लोग होंगे, आप ही क्यों? इसीलिए तो वो पूछ रहे हैं व्हाट इफ आई डोंट चूज यू। इस क्वेश्चन को पूछने का हाँ बेसिक मतलब ये होता है, हम आपको इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव बता देते हैं तो ताकि आप आंसर बेटर फ्रेम कर पाए। इसको पूछने का मतलब ये होता है कि आप एक किस तरह के इंसान हैं, क्योंकि कुछ लोग होंगे व्हाट इफ आई डोंट चूज यू, अगर मैं आपको नहीं चुनता हूं तो इसका कुछ लोग आंसर बोलेंगे कि आई हैव अप्लाइड टू सम अदर प्लेसेस, मैंने और जगह भी अप्लाई किया हुआ है, वहां से आएगा, अगर आप नहीं चूज करते हो तो कहीं और से आएगा। तो इस अगर आप ऐसा जवाब देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि यू आर डिमीनिंग दैट इंस्टीट्यूशन। इसका एक सबसे अच्छा आंसर ये होता है कि आई विल वर्क हार्ड, आई विल फिगर आउट वेयर आई हैव गॉन रॉन्ग, एंड इफ यू कैन टेल मी माई मिस्टेक्स आई विल बी वेरी pleasure to know, it will be a pleasure to know where I have gone wrong or what mistakes I have done, and I will work on those mistakes and appear next time with more strength and more hard job। ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि आप डेडिकेटेड हैं। ये क्वेश्चन होता ही इसलिए है कि आपका डेडिकेशन देखने के लिए, आप किस एटीट्यूड में काम करेंगे। अगर आपने ये बोल दिया कि मैं कहीं और देख लूंगा, या फिर आई विल स्विच टू सम अदर जॉब, आई विल कंटिन्यू सम अदर थिंग, इसका मतलब होगा कि आप पीएचडी के लिए डेडिकेटेड ही नहीं है। आप सिर्फ करने आए हैं, अगर आपको मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप कहीं और जाके काम कर लेंगे। इस तरह के कैंडिडेट चाहिए ही नहीं। एकेडमिक डेडिकेशन इज अ मस्ट। एकेडमिक डेडिकेशन बहुत जरूरी है पीएचडी के लिए। 4 साल पीएचडी कर लेना बाहरी दुनिया को बहुत बड़ा लगता है, अरे 4 साल है, 5 साल है। आप अंदर आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना कठिन काम है, और कठिन इसीलिए है क्योंकि आप आईआईएम में घुसेंगे। IIM PhD is one of the best in India, one of the best in India। बहुत अच्छी आईआईटीज और ये कुछ IIMs जिस तरह की पीएचडी करा रहे हैं, मुझे नहीं लगता इंडिया में कहीं हो रहा है। मैनेजमेंट फील्ड में कंडीशन, साइंस में जाएंगे तो बीएचयू इज फिनोमिनल, आर्ट्स में जाएंगे जेएनयू एंड डीयू इज फिनोमिनल, लेकिन मैनेजमेंट फील्ड में जिस तरह की पीएचडी यहाँ हो रही है कहीं नहीं हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, if I may give you an offer, will you accept or you will switch to some other IIMs or bigger IIMs? मतलब कहने का मतलब ये है कि for example you are sitting in IIM Raipur interview, so have you applied to some other places? They will ask, so answer it, have you applied to some other places? Yes, I have applied. I have applied, but it would be my absolute pleasure or absolute honor to work in the institution with the likes of teacher, with the likes of professor who has such a who has who holds such a great बस बस great बस बस, एक बात आप लोग और ध्यान रखिएगा कि ज्यादा बोलने की कोशिश मत कीजिए, ज्यादा बोलना नुकसानदेह होता है। Have you applied to other places? Yes, I have applied to some other places also। तब वो फिर से पूछेंगे ना कहाँ अप्लाई किया, आप पहले से क्यों बता रहे हैं? डोंट इनवाइट क्वेश्चंस, अपने तरफ से ज्यादा क्वेश्चन इनवाइट मत करिए। अच्छा, अब जो आपने बोल दिया कि हाँ मैंने और भी जगह अप्लाई किया है, तो विल यू एक्सेप्ट आवर ऑफर और अ बिगर आईएम और अ हायर आईएम? हम्म। I will certainly, if I get the offer to join the this particular IIM, I will definitely. It would be my honor to join this particular IIM, because the kind of faculty which I will get, who has hold on their subject, who has done the work in that field. अब आप मुझे एक बात बताइए, एक फैकल्टी है IIM रायपुर में HR डिपार्टमेंट में, वही HR डिपार्टमेंट IIM अहमदाबाद बैंगलोर में भी होगा, Uh, वहां भी प्रोफेसर होंगे।
तो अब आप कैसे कहेंगे कि IIM रायपुर वाली फैकल्टी ही बहुत अच्छी है, बैंगलोर अहमदाबाद वाली अच्छी नहीं है? तो होगा नहीं। यस सर। तो आपका आंसर यहीं पे गलत हो जाएगा। हम इसका या आपको डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं। आप ये बोलेंगे, यस आई हैव अप्लाइड टू सम अदर प्लेसेस, बट टिल नाउ आई हैव नॉट गेट एनी कॉल्स, नो कॉल हैज बीन कन्वर्टेड till that particular point of time. I have not got any conversion call from any of other institute. So if this will be my pleasure if I get first call from your institute, and I will definitely consider it in my PhD acceptance. अब क्या हुआ, इस जब ये आपने ये आंसर दिया तो अब इसके आगे सवाल नहीं बचता। मैंने अप्लाई तो किया है पर अभी तक कहीं से आया नहीं, भले आपके पास आ गया हो लेकिन आपको बोलना यही है। दिस वुड बी वन ऑफ द आंसर्स। आप और अच्छा आंसर फ्रेम कर पाए तो बेहतर है, पर मुझे लगता है ये एक डिप्लोमेटिक आंसर है कि मुझे अभी तक कहीं से कॉल आया नहीं है। अगर आपका पहला कॉल आता है तो डेफिनेटली आई विल गो विथ यू, क्योंकि मेरे पास कोई और कॉल ही नहीं है, तो हम कैसे बताएं कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। क्वेश्चंस? नो सर, हो गया, क्लियर हो गया, थैंक यू सर। दिस सेशन इज गोइंग यूजफुल और बोरिंग टाइप का चल रहा है? No, it's No, no, useful. it's very It's useful. useful for me specifically. सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरव्यू। आई थिंक इंटरव्यू में और कुछ तो नहीं बचता है मुझे लगता है। आप टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ का आंसर पेपर पे लिख के 2-3 एडिटिंग उसकी करके एक अच्छा सा आंसर बना के रट लीजिएगा और वो बोलिएगा। और आजकल तो इंटरव्यू ऑनलाइन होते हैं, आप लैपटॉप से खोलिए, लैपटॉप के कीबोर्ड पे वो पेपर रख दीजिए, बोलते रहिए। कीबोर्ड पे क्यों, सामने स्क्रीन पे रख दीजिए ना, कैमरा में से स्क्रीन थोड़ी दिखेगी, आप दिखेंगे। मतलब ये सब ऑनलाइन वाले टैक्टिक्स हैं, अगर आप प्लीज। Okay, भैया, okay sir. I will definitely try my best. हाँ बिल्कुल ट्राई That's करिए, all I बिल्कुल can. ट्राई करिए। और एक बात और, नेवर स्टिक टू एनी वन IIM। आप 5-7-10 फॉर्म एक साथ भरिए, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। Yes sir. जितने हो सके फॉर्म भरिए। रायपुर रायपुर भरा है आपने? रायपुर का नहीं भरा मैंने, और 3-4 भरे हैं। रायपुर का मुझे पता नहीं था कि आया है कि नहीं आया। 3-4 उसके अलावा कोई बोधगया का बात नहीं, भरा अभी है अभी मेरे और ख्याल से रायपुर ओपन होगा। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज आप भरिएगा। हाँ, भर दूंगा मैं सर उसमें। हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप में से कोई रायपुर आता है तो। ठीक है सर, भरता हूँ मैं उसमें फिर। और रायपुर ही क्यों, मतलब मेरे कई लोगों को मैंने देखा है, वो एक मेंटल रेस्ट्रिक्शन रखते हैं अपने माइंड में कि दे वांट टू गो टू टॉप टियर IIMs ओनली, ABCKL। ठीक है, बहुत अच्छे काम करते हैं वो लोग, लेकिन जो न्यू जनरेशन सेकंड जनरेशन IIMs हैं हमारे लेवल वाले, वो भी कुछ बुरा काम नहीं कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई थिंक एवरी IIM इज डूइंग गुड इन देयर फील्ड। ओके, लेट्स बैक टू आवर बिजनेस। Thank you. Thank you. इंटरव्यू में और आप कुछ आपके सवाल हो तो पूछिए, वरना मुझे तो नहीं लग रहा कुछ और बताने की जरूरत है। टेल मी समथिंग अबाउट योर ये सेल्फ। आप एक, हाँ हाँ हाँ, वो इंट्रोडक्शन पार्ट वाले का थोड़ा वो था, तो आपने क्लियर कर दिया, तो वो एक मेरे लिए तो एक एज हो गया, मतलब कि सही है, आपने टाइम पे मतलब पहले ही आके बता दिया कैसे होगा, हाँ हाँ हाँ, तो आप जो गलती अभी यहाँ पे की है ना वो वहां मत कीजिएगा। सबसे अच्छा रहता है आप स्क्रिप्टेड बोलिए। आप वहां पे एक्सटेम्पोर बोलने जाएंगे, आपसे गलती हो जाएगा। आप स्क्रिप्टेड बोलिए, स्क्रिप्ट लिखिए, उसके लिए प्रॉपर स्क्रिप्ट लिखिए। ये मैंने IIM इंदौर के इंटरव्यू में यही गलती की थी, और जो हद घटिया इंटरव्यू गया है वो मेरा, मतलब आई वॉज लिटरली स्पीकिंग, नो सर आई डोंट नो, लिटरली एम्बैरेस्ड इन फ्रंट ऑफ द पैनल। आई वॉज सो कॉन्फिडेंट। हाँ हाँ, do they provide the comfort, means do they ना ना try ना to ना ना ना, so they drill you? they grill you, they will grill you. Depends on faculty, depends on the kind of person who is taking your interview. But I don't think they will provide you. I'm saying na, IIM is all about rigor. बहुत rigor है यहाँ, पर बहुत कुछ सीखने को I भी है। actually have करेक्ट, प्लीज। uh,
I also got some interview calls actually from Lucknow, and so I am from engineering and banking background. So I have applied for like finance and accounting area. So like, how should I? So Arey, like while preparing, hello. yeah. Please, please. Yeah, so like while preparing, I just wanted to know like which area I like had to focus more on. Like, You are engineering background. yeah, yes, engineering, and I also have a degree in banking, and then I actually have 1 year work experience with a bank as well. हाँ अरे तब तो हो गया ना. Then you should not be focused on your engineering background. Focus on your bank degree and bank that experience. Yeah, sure. So when you will say about yourself, you try to focus on these things. You try to talk about this. This is the job I have done. This is the degree that I've got. I got to learn about these things. The problem that I was facing was this and this. So I want to get into the intricacies of this problem. And because of this, I want to do PhD in this area. That's it. Yeah, आप thank you. Thank you. इंजीनियरिंग में जाओ मत. We should not be talking about engineering because the candidate faces a problem when he has masters in some other subject and he wants to do PhD in some other subject. So there is no bridge between these two. There has to be a bridge, and there is a bridge. You have done some banking degree and you have a banking experience. That's all. That's enough. So focus on these. Yeah, When they ask you, tell me something about yourself. Your answer should be focused on these aspects: your experience, what kind of work you have done in banking, and what was the degree all about, what you got to learn from there, and combining these two, how you are going to use these two things in PhD. So your PhD topic should be related to these two. The problem I have faced was this. Therefore, I'm for example, let's take an example. So I don't know about what work you have done. Let's suppose you have done some work in investment banking. So I want to do PhD in investment banking because I have faced this practical problem that I want to address through PhD. That's it. okay, yeah. Uh, 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 I had one. experience of practical world and corporate world is given certain edge also in PhD. And I am used to give certain advantage to those candidates who have prior experience in managerial position or any other corporate job. So ऐसे लोगों को थोड़ा सा वो prefer करते हैं. Sir, So Yes, yes. I wanted to ask one question. So during my PG time, I prepared some questionnaire for a teacher who was doing a research work for the Delhi University, and she asked me to prepare some questionnaire. So should I mention about this in the interview? No. No, I don't think so. One questionnaire preparation क्या मतलब है Okay, उसका? sir. Okay, sir. That's why I wanted to ask you to नहीं, just get the idea of it. I don't think so. उसकी relevance नहीं है उसकी. सर रिसर्च एरिया के बारे में पूछते हैं क्या उसमें? हाँ आप मैंने अभी बताया ना. आप जब वो बताएंगे अपना रिसर्च इंटरेस्ट बताएंगे तो आप रिसर्च एरिया ही तो बता रहे हैं बेसिकली कि मेरा ये रिसर्च एरिया है, मैं इसमें रिसर्च करना चाहता हूँ, तो फिर वो उसी में से क्वेश्चन पूछेंगे. अच्छा, ठीक है. इसीलिए वहां पे आप स्पेसिफिक रहिएगा और बोलिएगा वही जिसके बारे में आपको पता है, या फिर उसके बारे में पढ़ के जाइएगा. फॉर एग्जाम्पल जी हम अपना बिल्कुल. एग्जाम्पल देते हैं. मैंने जब अपना रिसर्च इंटरेस्ट बताया तो जैसे मैंने वो ट्राइंगल बनाया था तो मैंने शुरू किया फाइनेंस में. मुझे फाइनेंस पसंद है. फाइनेंस के बाद आई वांट टू लर्न मोर अबाउट स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड बिकॉज सिंस लास्ट 2 years आई एम इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट्स and I'm investing in mutual funds. So I have developed interest into these, and I want to know more about it, and I want to study the literature of these subjects. So I want to do research in stock market and mutual fund. Specifically, I have worked on these two aspects, and I have written a paper titled this and this, which was published in so and so book. So uh, apart from that, I have used this and this tools. For example, I have said Sharpe ratio, Johnson ratio, and Treynor ratio. I have used these tools to analyze the performance of mutual fund.
सो जब मैंने इतना डिटेल दे दिया उनको तो उनके पास क्वेश्चन बहुत सारे हो गए और इन्हीं में से हो गए। तो अगला क्वेश्चन आता था मेरे से, कम से कम 2-3 इंटरव्यूज में मुझसे यही पूछा गया, व्हाट इज शार्प रेशियो, व्हाट इज जेंसन रेशियो। अब इन सब पे मैंने 50 काम करके रखे थे, मुझे मुंह से पता था। मेरे चैनल पे इसके वीडियोस भी हैं, मैंने वीडियो तक डाल दिया था। हम्म, आप वही बोलिए जिसपे आपका पकड़ है, बस। या फिर पकड़ बना लीजिए बोलने से पहले। ठीक है सर। हैफेजर्ड वे में मत जाइएगा, ये गलती मत कीजिएगा, इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। जितना आप, ओके, the more you will be detailed, the more they will get the avenues to ask. The more you will be specific, the more they will get the specific questions to ask. So don't let them to be widened enough. Kuch current situations, some current situations may also be helping you. For example, if you are applying in economics, what current economic scenarios of the country is going on? Current practical situations, you should be aware with those statistics and data. That will also maybe a point where interviewers can ask questions. Are you aware of the present day news or not? Some IIM may also ask you about research proposal. Some IIMs may ask, I don't know what is the procedure right now it is going, but some IIMs may ask, if not proposal, a synopsis of research. You guys are aware about that letter of recommendation? Yes. एक बार बता दीजिए सर, मुझे नहीं पता। So, letter of recommendation is a letter from where in which you get some recommendation from your university professor. So they write about you, how do they know you, what they have teach you, and what kind of person you are. And they write, ki, I recommend this candidate to be selected at your institute. That's it. Screen is visible. Yes, sir. You can see this. यस Yes, सर। sir. So this is a synopsis. I think this was prepared for Lucknow University, September 2020. Okay. This is mine only. So I don't think IIMs ask in such detailed PDF form synopsis, but in their forms they can ask you to write about these things. So you start. This is just a form of a paper. How you write research paper. So first you give an introduction of a topic. This is the topic. What you want to do. Then start with introduction. The details of the topic, what you are talking about. You need not, or you may not give it paragraph by paragraph. You can include the details of your topic in the introduction section itself, and ideal is that only. At that time, I was not knowing about these things, so I prepared in this way. But the introduction is introduction of a topic only. So whatever you need to write about, for example, the topic is ETF, exchange traded funds. So I prepared the synopsis on exchange traded funds. So the details of exchange traded fund can be included in introduction section only. The key features can also be included here. No need to give separate sections, separate headings.
Review of literature. What kind of literature are you reviewing? What is the research gap? This is the most important thing of synopsis. What is the research gap that you find? Why this research needs to be done? What is the importance of this research? Need of the study, objectives, what you are going to do, what is your hypothesis, what is your research question. This is the proper research question that you want to address. What would be the methodology of So, research? sir, These are all objective can be research question, right? objective and research question. So, to study about the emergence, development, forms, and other relevant aspects of ETF. When you convert this into research question, you can convert this into research question. For example, to evaluate the performance of selected ETFs in India, you can convert it into the question as um, the performance of selected ETF mutual funds in India is good. I want to test this, whether it is good or bad, or it is above the benchmark or lower than the benchmark. These are very simple research questions. I'm telling you, these I have written is 3 4 years back. Right now, when I am seeing this, I can say that this is not a good style of writing, but this is a format of writing. Content wise it is okay, but what I am writing here, or what I am trying to portray here may not be portrayed with the things that I have written right now. For example, the performance of selected ETFs in India. Performance, this kind of research question is very old. Currently, these are not in trend. So if you say this, they may say you ki, this is already done. What new are you adding to the literature? What new are you going to find? So there's nothing new in this research question. So you have to think what addition you can do. What always prepare research question on basis of what have not been done, because research is all about that only. If you are researching upon a thing which is already been done, there is no addition to the knowledge, and the objective of research is to add to the knowledge, to add to the body of knowledge. So focus on what new you can add. I'm most of the people maybe knowing about it, but you can use this. This is a free. Sorry, Google search मैंने लिख दिया. Google Scholar. Use this. For example, search on Google Scholar. Uh, can you see this? My new window. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You guys know about Google Scholar, or you don't know about it? Yes, sir, we do. I do. Yeah, we, हाँ सब ठीक है सब ठीक है. So go to Google Scholar. See what new questions related to your topic is going on. You can even copy from that. Okay, I want to do this. There, it has been done or not, or whoever remembers. But focus on new, something new. This is not new. Performance. These questions are not new. These are old questions. You need to talk about methodology of research that you plan to do. Uh, for example, you can use regression if you are in economics and finance. You can do factor analysis if you are in marketing, OBHR. So this is the methodology of secondary data, and this is the methodology of when you have primary data. So according to the kind of data you will be working on, the methodology will be depending upon that. What would be your sample? What would be your period of the study? How will you collect the data? What would be your hypothesis? Actually, this hypothesis should have come earlier. This is not required. And references. So this is a detailed synopsis. Most of the IIMs, I don't think they ask it in such detailed form. But when you get to fill their form, in their form, there may be some sections where you need to write about your interest. Yes, sir. है ना? Statement of purpose. They ask The for statement of purpose. Yes. In IIM they call SOP, statement of purpose. It was slipping from my mind. SOP.
Statement of purpose. This is a detailed research proposal. That was synopsis and this is proposal. Most of the time they are similar. I think यहाँ भी content वही होगा. Same content is here also. So statement of purpose is different. A statement of purpose is a brief uh, paragraph, दो तीन paragraph या maximum one paragraph में भी होता है कि what you are trying to do, what you are trying to uh, come and work on. What is your work interest when you will getting selected, or on what topic or on what research question you would be working if you get selected. When you get to PhD interviews in universities, they ask for a proposal interview, sorry, proposal presentation. So such synopses are presented there, and from your presentation they ask questions. Okay, so proposal done, interview done. Any other question left, or you guys have any other question? Please, sir. Thank you. If any other things required, Yeah, it was very useful. just be active on that group. Whenever I feel, as I said, this session was not planned. Some person asked me, so I feel ki yes, this is the interview session, interview season going on for the IIM, so I must conduct one session. I can conduct one more, but since next week is Holi, so I am leaving from my house. I will not be here in Raipur in campus. Probably anytime you want, maybe next week or 1 or 2 days later also. Any other question remains or any particular problem, you can feel free to reach me. I hope this session is useful and you guys are always Yes, sir. welcome. You had a great audience. This is all from my side. Thank you so much. If Thank you you, want Thank to you, sir. sir. say Yeah, something, thank you please so feel. much. Okay, thank you, thank you. I mean, it definitely have added value to my, means especially for me. Uh, this will definitely help me because I had faced problem of script problem in the interview. Mm-hmm. So it will definitely help me. I'm sure of it. Definitely. Whenever you get 2, 3 interviews, na, you will get used to it. Now, you will understand the mentality of the interviewer. After 2, 3 interviews, if you observe what are they trying to do, just improve. Try to improve. With every interview, whatever mistakes you have done, what questions you were not able to answer, or you have skipped something, you were thinking something else, but speak something else. You try to just figure out those things. Try to note it down and then work on those things. This will improve you by for further interviews, next interviews. Yes. I have learned from this only. I'm nothing I've gained from some other people or other big shots. I have learned from my observations only. My observations only have made me like that. Whatever I'm delivering to you. So I have not gained from anywhere else. Yeah, thank you so much for this actually because when I was I also be shortlisted for interviews and when I was to look on what they were expecting, I was able to really find information about like MBA, as you said, Correct, his correct, correct, CAP correct, 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 process and all those things. correct. I was actually thinking in that way. Actually. Now Voice is breaking. I got to know on what exactly I need. Yeah, yeah. Check. I use actually on because Your voice is little breaking, so so it is difficult to this understand. will But help you on the I got to know what you're trying to say. You are absolutely correct. Whenever you go to search something on PhD in IIM, you 90% of the information is available of MBAs, PGPs, PGP programs, CAT, and all. PhD is very less. I will try to upload certain sections of this session on my channel also. Uh, let's see how it goes. Actually, the audience is very limited in number.
So that much growth is not there. But okay, everything is for goodness of the society. So please be connected with me. I would love to be in your network. I think because academic community is very small, we may not know. I will tell you one story. Yeah, my first batch, my first session, 2021, 2022, they had some candidates, and I remember by name some of them. Like one girl was there, Ankita. Ankita currently she is working in IIM Kozhikode. There was Utkarsh. Utkarsh is currently working in IIM Ranchi. So these are very like my first sessions when I used to conduct. These were most that usual candidate that used to come in every meeting. So I helped them. I mentored them in my first year, and they got their calls converted. Recently, I met Utkarsh in one of the conferences that I was. I was there in IIM Sambalpur in January month. I met him. I was not able to recognize him, but he recognized me. He recognized me as sir, I am Utkarsh. When he said he is Utkarsh Nivoti, I just it clicked to my mind that yes, he is from my first session that I conducted 2 years back. So this academic community is very small. We don't know when we will be meeting. When we don't know when one of us may help other, or few of us may help someone else, because IIM community, or especially this good researchers community in India, is very small. You may not know who will be your helping guide at what place at what time. You will meet at some other place in some conferences, some seminars. Your paper will be evaluated by some of your friend. You will be evaluating some papers for your friend. So these things go on, and this community is very connected, and um, so that's why I'm saying be connected wherever you are or whatever you are doing. Sure. So much. So all the best. Any queries, feel free to reach at Telegram. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye bye. Take care. Bye, sir. Take care, sir. Take care. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.